Good afternoon, students. Today we are going to start the development of embryo after the fertilization. In previous video, we have done the topic fertilization, in which we have seen there is internal fertilization in human being. It occurs in the fallopian tube, where sperm reaches into the fallopian tube and ovum reaches from the ovary, and in fallopian tube the fertilization occurs. After the fertilization, the embryo is formed, and the development of embryo resultant the development of baby. And after the complete development of embryo, the childbirth occurs. So first step is implantation. What is the meaning of implantation? After the fertilization, zygote starts divide, and it redivide, and it forms a mass of cell, many cells which are similar in size, shape and structure. This type of mass of cell is called blastocyst, and this blastocyst is attached to the uterine wall. And in uterine wall, basically endometrium, which is rich in blood vascular supply, and this blastocyst is embedded in this endometrium for further development and further nourishment. After that, after the attachment of blastocyst in uterine wall, this process is called implantation. When the blastocyst, when the mass of cells which is called blastocyst, when embedded in the endometrium, then it is called implantation, and it takes 7 days after fertilization, and after 7 days after implantation the pregnancy starts. तो प्रेगनेंसी कहाँ से स्टार्ट मानते हैं? इम्प्लांटेशन से. When the implantation occurred, the menstrual cycle stopped, and formation of second step, formation of placenta. When the blastocyst attached to the endometrium, the embryo gets nourishment from mother's blood, and for this a special tissue, a special cord is found in the maternal body, which is called placenta. And this placenta is a disc-like structure which is embedded into uterine wall, and it contains villi on the embryo side and for side of the tissue, and on the mother side there are blood spaces which surround the villi, and villi provide a large surface area for glucose and oxygen to pass from the mother to the embryo, because embryo takes its nutrient and the gases oxygen from the mother's blood, and it also remove waste from embryo टू मैटरनल ब्लड. ये जो एम्ब्रियो है अपनी मेटाबॉलिज्म जो भी करेगा, उसमें जो भी वेस्ट बनेंगे वो वेस्ट फिर प्लेसेंटा के थ्रू मैटरनल ब्लड में जाएंगे, और मैटरनल ब्लड में जाने के बाद उसका जो होगा बाहर बॉडी से मैटरनल ब्लड बॉडी के थ्रू ही वो बाहर निकल जाएगा. तो ये था हमारा पूरा रिप्रोडक्शन टॉपिक. इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ. What is the reproductive health meaning? Reproductive health means healthy reproductive life without STDs. What is the meaning of STDs? STDs, that means sexually transmitted diseases. बिना कोई डिसीज़ के जो हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ है उसी को ही बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, in which the couple avoid unwanted pregnancy and it care of infant and mother etc. इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि जो इन्फेंट यानी कि बिल्कुल जो अभी अभी बेबी हुआ है वो और उसकी मदर तो उनकी कैसे केयर करते हैं इसमें. तो
So firstly we have to study this STDs. STDs means sexually transmitted diseases. That means the diseases which are spread by the infected person to a healthy person by sexual contact. So they are called sexually transmitted diseases. There are many types according to the pathogens. When the pathogen is bacteria, then it is called bacterial STDs. And some examples are there which are caused by the bacteria like gonorrhea. It is caused by Neisseria gonorrhea bacteria, and due to this disease a burning sensation and pain during urination. When we pass urine, then we feel burning sensation and pain. Pus in penis or vagina. When it occurs in male, then pus occurs in penis, and when this gonorrhea is found in female, then pus found in vagina. Curable with antibiotic. It can curable, and it is removed with the help of antibiotics. Next disease is syphilis. Syphilis is caused by Trypanosoma pallidum, and this bacteria infect in genital tract of the male and female. Some viral STDs are also found which are caused by virus. Firstly, that is AIDS. AIDS is also transmitted through the sex, and this AIDS is stand for acquired immunodeficiency syndrome, and it is caused by a virus which is called HIV. HIV, that means human immunodeficiency virus, and due to this disease the person feel weak immune system, in which due to this weak immune system person can die with a very little disease. And next disease is next topic is control of STDs. How can we prevent this STDs to? So first is avoid multi-partner. When a person use multi-partner, then it can risk that he is risk in STDs. Educate the people about STDs transmission and using condom during intercourse, and don't share needles and other things. And next topic is contraception. What is the meaning of contraception? To prevent the unwanted pregnancy, the couple use some methods to prevent pregnancy, to prevent fertilization. This method is called contraception, and some methods couple use that methods or devices of birth control which prevent fertilization is called contraception. First method is barrier method, second is chemical method, and next is surgical method. Barrier method, in which this method is used by a couple in which a physical device are used to prevent entry of sperm into the female genital tract, like condoms. It is a thin strong rubber sheath used by men to cover the erect penis during the sexual intercourse. And the chemical method, in which the person uses some chemical to prevent fertilization, in which they can use oral pills by changing the hormonal balance of body so that egg is not released and fertilization cannot occur. So chemical method is used by female basically, in which female takes oral pills which are the tablet which are orally taken by woman, and it prevents ovulation to check fertilization. जब ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओवर रिलीज नहीं होंगे, तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जिससे अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है. बट दे हैव सम साइड इफेक्ट ऑल्सो. Beside these, some intrauterine devices are also used. Intra, that means inside the uterus. In previous method, we have seen that they are the method which are used by physically or the chemically, but some devices are used to introduce the uterus of the female
and to prevent the fertilization. A device is inserted to the uterus to check fertilization, like copper T, which is made up of copper, and it release copper ion. And what is the logic? This copper ion help to check fertilization because the copper ion prevent the motility of the sperm. जो sperm है उनके जो मोशन करने का है, जो जिससे वो चलते हैं, चल के ऊपर पहुंचते हैं, वो कॉपर आयन उसको रोक देते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, वो फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंचते और जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं होता. तो कॉपर टी बट सम हैज़ साइड इफेक्ट ऑन बॉडी. सर्जिकल मैथड. ड्यू टू in surgical method, blockage of ducts of male और फीमेल कैन ऑल्सो चेक फर्टिलाइजेशन. इसमें मेल और फीमेल की जो डक्ट्स स्पर्म ला रही हैं या जो ओवम लेके आ रही हैं, उन डक्ट को काट के उनको सील कर देते हैं, ताकि क्या होता है, उनका जो आना ही नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता. व्हेन द रिमूवल ऑफ स्मॉल पोर्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब and cut ends are then tied with the threads in female, then it is called tubectomy. ये फीमेल में होती है और इसमें फैलोपियन ट्यूब का थोड़ा सा पोर्शन कट करके उनके दोनों सिरों को थ्रेड से टाइड अप कर देते हैं. तो इससे क्या होता है, ओवरी से जो ओवम रिलीज होता है वो फैलोपियन ट्यूब में नहीं आता और जिससे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन रुक जाता है. इट प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ एग इनटू fallopian tube. And vasectomy, it is found in male where the removal of some portion of vas difference, और यहाँ पर भी इसी तरह करेंगे, वास डिफरेंस का पोर्शन कट करके उसके दोनों सिरों को क्या कर देंगे, टाइड अप कर देंगे थ्रेड से. तो ये मेल में होती है. तो ये थे सर्जिकल और मेथड, सारे मेथड थे कॉन्ट्रासेप्शन के. लेकिन अगर इनके बावजूद भी कोई फेलियर हो जाता है कॉन्ट्रासेप्शन मेथड और अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है, तो उसके लिए फिर है अबॉर्शन. अबॉर्शन का मतलब होता है द मेडिकल टर्मिनेशन बाय सर्जरी. इससे क्या होता है, अबॉर्शन का मतलब होता है कि मेडिकल टर्मिनेशन कर दिया है हमने, फीटस अभी पूरी तरह से वायबल नहीं हुआ, डेवलप नहीं हुआ, उसको पहले ही बॉडी से बाहर रिमूव करने को अबॉर्शन कहते हैं. इसके यूजेस क्या थे, टू रिमूव अनवांटेड प्रेगनेंसी और अनहेल्दी फीटस. पहले इसको इसलिए यूज़ किया जाता था कि जो पहले चेकआउट करते थे बेबी ठीक है या नहीं है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो बेबी को निकाल लेते थे. लेकिन अब आजकल इसका मिसयूज़ होने लगा है. मिसयूज़ पीपल करते हैं, उससे फीमेल फीटिसाइड हो रही है और फीमेल चाइल्ड को जो पहले ही देख लेते हैं और उसको ख़त्म कर देते हैं. तो इसका ये मिसयूज़ है. आज ही आपका चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है. इसके बाद हम चैप्टर 15 आर एनवायरनमेंट शुरू करेंगे और उसके मैंने नोट्स आपको भेज दिए हैं, उनको आपने नोटबुक में अच्छे से लिखना है. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.